how are you? Hope all of you are fine and healthy. अभी हम लोग का समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है. थोड़ा सा फ्री हूँ. मेरी मम्मी भी आई है और हाँ, आज हम लोग जा रहे हैं इंडिया हैबिटेट सेंटर. ये पीछे मम्मी बैठी है और इस पास में हस्बैंड है. तो अभी हम लोग जा रहे हैं इंडिया हैबिटेट सेंटर, जहाँ फिल्म फेस्टिवल हो रहा है. और इस फिल्म फेस्टिवल में जो अवार्ड विनिंग मूवीज़ है, सारे इंडियन रीजनल लैंग्वेज के सब मूवीज़ दिखा रहे हैं. और हम लोग पहले भी हम लोगों ने देखा है 2-3 एसएमएस मूवीज़. बहुत ही अच्छा लगा है. और आज हम लोग जा रहे हैं 2 मूवीज़ देखने. एक 2 बजे से है और उस मूवी का नाम है अक्वामैन. और नेक्स्ट एक 7 बजे एक शो है, वो मूवी का नाम है मुखा. दिस इज इंडिया हैबिटेट सेंटर. वी आर एंटरिंग here in the campus, and this is the gate, and see the building. It is really nice. It is a home to numerous organizations and events that take place on a daily basis. It has 15 auditorium and conference venues that are well equipped with the best facilities, and these are always hosting all sorts of events. There is a library where the intellectual people can come and for research and writing work, and there is a big hub so one can enjoy the lunch and dinner and all the different cuisine, and there is a visual arts gallery also. So basically it is really a place where one can enjoy different types of exhibitions and research and events. One can see the movies and one can enjoy the food also. So ये लोधी रोड में है. अभी यहाँ 10 days पैन इंडियन फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है. 5th से हो रहा है 14th तक. तो 60 films across 17 Indian languages, and different types of award winning movies are showing here, and this is really a great opportunity for us to be here. Please stay back for a Q&A with the director and one of the lead actors of the film. Pranjal, if you are here, I'd like to invite you on stage. For those who may have joined late, this is Pranjal Saikia, the director of the film, and a last round of applause for him. This is his debut film. And this is Biswajit Hondikoy. I'm sure all of you recognize him from the film. Guys, वीडियो को एंड मोमेंट तक देखिएगा प्लीज़. और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा. एक मूवी देख लिया है और एक मूवी है 7 o'clock, वो भी हमने देखा है. तो ये अभी आई हूँ कैफेटेरिया में. हम लोग कुछ खाने के लिए चाय वाय पियेंगे. मैं अभी तो ईटिंग टाइम है, तो आज माँ बेटी अभी आराम से खाएगी. अब एक मूवी देख के अभी ये सारे कुछ ऑर्डर दिया है मैंने. और ये देखिए, ये है दही पूरी और बर्गर, चिकन बर्गर विद फ्राइज, एंड दिस इज़ नूडल्स, चिली गार्लिक नूडल्स.
एक पैक है बेटे के लिए और एक हम लोग खाएंगे। और ये मम्मी ने स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। मम्मी मूवी कैसा लगा फर्स्ट वाला? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ मूवी अच्छी थी बहुत, मतलब हाँ नेचुरल और कोई उसमें ये नहीं है। असम का गांव का, हाँ गांव का स्टोरी है और कोई मतलब रियलिटी में बेस करके बहुत ही अच्छा बना है। ओके तो हम अभी एंजॉय करेंगे खाना। खाएंगे ये दही पूरी खाएंगे। टेस्टी। that has done several festival rounds internationally. I will name a few. It was amongst the Tiger competition at the International Film Festival of Rotterdam. At the Melbourne International Film Festival, the film was an official selection. It has also been screened at the PFI London Film Festival, the Singapore International Film Festival, amongst others. The film is a tale of lovers' quest, which traverses 5 time zones and 3 time zones. We are very happy and thrilled to have the crew and also the actors from the film amongst us who will be present for Q&A. I will quickly introduce them and then we will speak to them after the film. We have Mr. Nalin Agarwal, the co-producer of the film. Mr. Nikhil Mahajan, the music director. And of course, who doesn't know the famous actor Raj Joshi sir.